हाँ ठीक है. Okay, we're recording Okay, this. but then you'll have to edit this video when we start, I guess. हाँ भी I'll do that, कोई बात नहीं. वो एटलीस्ट अपलोड करूंगा तो यूट्यूब के स्टूडियो पे मेरे को वो ऑप्शन आ जाएगा. Okay. एटलीस्ट वी कैन हेयर ईच अदर राइट प्रॉपरली अब. Yes, perfect. I think this is like दिस इज मच smooth. बेटर. पर वो बोल रहा था ना कि लाइव जा सकते हैं तो फिर हाँ पता नहीं अभी. अभी यार सच सब बोल रहे टाइम नहीं है ये वो तो जस्ट स्टॉप दिस और क्या. जो टाइम नहीं है वो बंदा भाग गया। बोलो. चलो. और मैंने अभी खाना ऑर्डर किया और फिर जोमेटो से मैसेज आया बाय वन गेट वन फ्री मतलब। पर ब्रो बहुत ही उल्लू बनाने वाली डील्स है। तू जा वहाँ पर रेस्टोरेंट्स पे लिखा है बाय सेवन गेट थ्री फ्री। कहाँ पे. जोमेटो। भाई यहाँ पे तो एकदम अंधेरा हो गया है इतनी बारिश का माहौल है. नहीं काफी मेरा दिनों बाद है। राइट हैंड भी ब्लर हो रहा है. देख गायब हो जाता है नीचे. नहीं मेरे को दिख रहा है। यप यप. अपना तीन ही है क्या आज कॉल पे? अरे वो मील था ना. डील तो ठीक है। बाकी विजय। विजय क्या हो तो गया? अपने स्टार्ट करते हैं. चलो. uh, so, hey guys, this is our second podcast and I hope uh, I don't know I guess can I introduction. I just introduced myself. I am Varun. I'm an Arsenal fan supporting since 2004-5 जब से सब दुख स्टार्ट हुआ क्लब पे. आई थिंक मैं ही हूँ जिंक्स. एंड वी हैव ऑन द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ मी राहुल हु इज अ लिवरपूल फैन. राहुल कब से स्टार्ट किया सपोर्ट करना. 2006 2006 है. आई थिंक यू गाइस वन द चैंपियंस लीग था. Yeah, the funny thing is that I started watching football way before, but I was kind of supporting Newcastle man because I had a lot of relatives staying over there. So I was like, yeah, I don't न्यू know why, कैसल. but it's just yeah, I just have that feeling like because there are someone who is representing that whole city. So I used to watch that, and then slowly when you get a hang of football, like how it is, what the Premier League is really about, then you get to understand, like, okay, you're not supposed to support this club. I mean, like, you can go for something else. But yeah, it's the Istanbul final which attracted me. It's like underdogs always support the underdogs. It's the Yeah, that was an whole awesome match. affection Yeah. towards that. Yeah, so yeah, And that's what got me into it. we have Neil. So he's a United fan. Neil कब चालू किया सपोर्ट करना. Yeah, so I like started playing football first, like in school. So I think in probably 2004-5 I started playing, and I had no clue about Premier Leagues or like things like that. Like probably Beckham and Messi, ये सबको follow करता था. But my first Manchester United match was the final between Chelsea and United in Moscow, I guess. So I think that was my first match. Owen Hargreaves, Paul Scholes, Van der Sar. So yeah, great time to start following, but after that, the next 15 years have not been particularly great. So भाई yeah. मोहित तेरा तो. एंड वी हैव मोहित आई रिमेम्बर यू सपोर्टिंग सिंस 2002 2001 जब आई थिंक प्रीमियर लीग यहाँ पे जस्ट चालू हुआ था आई थिंक ऑन Yeah, it just टेलीविजन. got introduced. आई थिंक दिखा तो रहे थे तब से ही। आई थिंक आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल बिकॉज ऑफ यूरोस। Yeah, Euros. I was supporting England, unfortunately, as you know, our choices are. I remember that day जब मैंने देखना स्टार्ट किया। आई थिंक पहला मैच था यूरोस का और इंग्लैंड का गोल्डन जनरेशन जो बोलते हैं। आपका बेकहेम, जेरार्ड, लैम्पार्ड,
रूनी का आई थिंक फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट, माइकल ओवन, भाई मतलब एशली कोल, इतने क्रेजी प्लेयर्स, राइट। और मेरे को याद है वो रात मैंने ये डिसाइड किया था कि, और तब स्कूल में थे तो ऐसा था कि रात को लेट मैच, अगर इंग्लैंड ने पहला गोल मारा तो मैं पूरा मैच देखूंगा, अगर फ्रांस ने पहले गोल मारा तो मैं सो जाऊंगा, बिकॉज यू नो यू कांट डू एनीथिंग। तो पहला गोल मारा लैम्पार्ड ने, हेडर, बेकहम की फ्री किक, आई वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। और 90th मिनट पे जिडान ने 2 गोल मारे, मतलब। Was it the same series जिसमें बेकहम का वो पूरा कंट्रोवर्सी हो गया था, like he missed the नहीं 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 नहीं, whatever? नॉट दैट, नॉट दैट। नहीं नहीं नहीं, दिस Hmm. इज वेयर ग्रीस वन द यूरोस, लाइक नो बिग country won it, Greece won it. And Greece won the Euros. yeah, they won the Okay, I Euros didn't that know year. about this. Yeah, but एंड post एंड that गेस I एंड गेस उसने किसको हराया था? ग्रीस, गेस, ग्रीस ने किसको Portugal, हराया था? यस। Portugal. Portugal. यार पोर्चुगल में तब तो वो लुइस फिगो आई थिंक प्रॉब्ली कुछ Luis अभी Figo था. था, Luis Figo था, Ronaldo. I कोरेस्मा, don't think played in Portugal. I don't नहीं think नहीं नहीं, था, Ronaldo तब was there. Ronaldo, Ronaldo नहीं था. Ronaldo was in the next कोरेस्मा था। Euros जहाँ पर, Oh, Quaresma. Ronaldo was in the next Euros जहाँ पर रोनाल्डो रोनी का पंगा हुआ था Euros में. But कोरेस्मा anyway, था, Oh, फिगो था, मनीष था, Manish. Manish. फिर Uh, Quaresma क्या ऑब्वियसली प्लेयर था रिकार्डो यार. कारवालियो था, पेpe था। anyway, देखो मेरा इंट्रो खत्म कर दो यार, स्टॉप बंटिंग इन। Oh, sorry. ओह उसके दैट्स बाद, क्वाइट, हाँ हाँ। yeah, that's quite a long introduction. Anyway, उसके बाद फिर I started already watching the Premier League, and the one player that I started watching the Premier League for was actually Ruud van Nistelrooy. I saw his compilation of scoring goals. I was like, I want to be like him. अब तो बाल नहीं रहे, पहले बाल थे थोड़े, तो थोड़ा लगता था उसकी वजह से। बट Bro, हाँ, आई वांटेड टू बी स्ट्राइकर, फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया रूट वेस्ट को देखना, और फिर तब से क्या फॉलोइंग। आई थिंक द फर्स्ट ट्रॉफी वन वाज द FA कप, ब्लैक जर्सी थी यूनाइटेड की, आई डोंट इवन रिमेंबर किसका नाम थी, but बट what year was this? वोडाफोन। आई थिंक 2002, 2003 या 4, तो 4 तब आई थिंक 4। तब तो YouTube भी नहीं था. Where do you see the compilation? कंपाइलेशन मतलब टीवी पे ही आ रहा था यार, ये जो दिखाते हैं ना, गोल्स गोल्स, Okay. ESPN पे नहीं, कोई तो those were तब पे। those ESPN. were the days where the pen drives and the sharings were too much. Oh Yeah, yes. Like, hey, सही dude, है। I have the Arsenal वाला मैच का वो highlights है with all this background music and I everything. don't So, think वो सब था ESPN पे, जो स्टार स्पोर्ट्स पे जो दिखा रहे थे वो देखते थे। हाँ, कंपाइलेशन वो वाला ऐसा रिकॉर्ड होगा, करके, हाँ। रूड मैन बेस्ट गोल्स, तो बस वो देखा, यार ये बंदा तो क्रेजी है, तो बस उसको फॉलो करना स्टार्ट किया और यूनाइटेड के फैन बन गए। और पहला ट्रॉफी जीता FA कप, और उसके बाद नो लुकिंग बैक। और बस वेट करे थे हम लोग, नहीं हमारा बने फैन, और फिर उसके बाद हारना चालू किया हम लोगों ने। We did win I one think Premier इंडिया League में तब after that. खाली ये सारे मैचेस ही दिखाते थे ना। आई थिंक ओनली द बिग फोर, ये तब नहीं नहीं नहीं। स्टार्टिंग में शायद Hmm. सारे दिखाते थे क्या? मतलब नहीं, आई थिंक सारे नहीं दिखाते यूनाइटेड, थे, आई थिंक लिवरपूल, चेल्सी ऐसे ही दिखाते थे, आई थिंक, इफ नॉट। प्राइम यार टाइम वाले जो भी टेक्निकली मैचेस थे वो दिखाते थे। हाँ, यार टेक्निकली तो क्योंकि अभी भी यहाँ पर सिर्फ वो मैचेस ही दिखाते हैं. नहीं नहीं दिखाते यार अब तो, अगर तू अब देखे तो तो नहीं काफी सारे ही कम, 3 से दिखाते 4 हैं। मैच थे। नहीं लाइक हाँ। लाइव व्हेन यू टॉकिंग अबाउट लाइव स्टार स्पोर्ट्स पे, तो ओनली द टॉप हम्म। मैचेस. बाकी बाकी लोग तो नो नो, हॉटस्टार वो सब अभी पे देख रहे होगे. नहीं नहीं नहीं, नाउ यू हैव दिस। if I'm I don't know if I'm allowed to even say those names because you're going, but it's like Star Sports Select, Star Sports Select HD, then you have Star Sports, Why, and like, then you why have aren't you so allowed to say it? I think we can say it. अपने कौन सा आई थिंक वी कैन से इट, पेड आई डोंट मैचेस थिंक देख रहे इट्स बिन टेबल। अगर हैं? होगा It's भी तो like हमने saying, 2 वीडियोस बनाए हैं। it's like क्या saying, फायदा? जैसे कि I know wrestlers अब नहीं बोलते WWF, but we all know, even they know it was WWF before. yeah. आज समर स्लैम था, सुबह सुबह मैंने देखा फाइनल मैच। Anyways, so let's get back to God, football. you still So follow that? I mean, the storyline is now, I mean, मेरे को पता है कि इट्स फेक। मैं टाइम पास के लिए देखता हूँ। आज आई वाज जस्ट डूइंग माय वॉकिंग ऑन माय ट्रेडमिल, तो मेरे को कुछ देखने के लिए चाहिए था, और लाइव चल रहा था तो देख लिया। बट या, मेरा वी कैन मूव फॉरवर्ड गाइस, आई गेस। कोई और आता है yeah, तो उसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे, बट नाउ लेट्स मूव yes. फॉरवर्ड।
Yeah, so since we are meeting for the second time and we just had a review last time around of the seasons, more or less. And लिवरपूल्स का मेन मेजर था कि क्लॉप जा रहा है ये वो लास्ट सीजन, so it was bit emotional and you guys did win a trophy, but I don't know उसकी वैल्यू इतनी नहीं है. But, and then Hey, value, I, hey. The youth team perform well. So हाँ yeah, एक्चुअली मतलब कि इट इज कंसिडर्ड इन द बिग क्लब्स की हमारी Hungry, यू नो hungry, यू hungry for more disappointments. But for Liverpool, I think Arne Slot is actually doing pretty well. अभी आर्सेनल को हराया 2-3 दिन पहले, and then you just beat United today 3-0. yeah. I Five think o see fluke the था, whole. See, I fluke don't know था about the fluke United and all, वाला. but I was searching for the highlights. I'm not getting the proper highlights for United match. Maybe I'll be getting it in their official YouTube channel later this day. But the earlier match, basically the Arsenal match, it's quite interesting where he's playing with two pivots over there. Curtis Jones is really playing amazing. Number 10 role में तुम्हारा हार्वी एलियट आ गया है, which is quite interesting to see. शोबसलाइ को इतना फ्री रोल दिया है जो लास्ट सीजन देखने को नहीं मिला था. और your fullbacks are quite wide, which is very rare to see from the Liverpool point of view. So it looks interesting. I don't know how it is going to be affecting, especially the teams like when we go properly playing against the Arsenal in the league and everything, because they're quite pressing team right now. ये प्रेस के सामने प्रेस प्रूवन टीम्स के सामने कैसे ये इफेक्ट करेगा आई डोंट नो दैट बिकॉज जितना I मैंने think देखा है बॉल ओरिएंटेड बहुत है दे आर कीपिंग द second बॉल half, वे टू मच मतलब it was a game of two halves where I think first half पे Liverpool had the possession and they converted the chances जो उनको दो मिले, and then Arsenal got back one. बट सेकेंड हाफ में आर्सेनल डिड गेट बैक द बॉल एंड दे वी आर कीपिंग इट. फिर आर्सेनल की जो पुरानी प्रॉब्लम थी वही क्रीपिंग हो गई, वेयर वी वर गेटिंग इन बट इट वही आप बॉक्स के पास घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, देयर इज नो पेनिट्रेशन, जो चांसेस मिल रहे कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं. सो आई कुड सी के यू नो लिवरपूल का जो करना चाहते हैं यू कुड सी ऑन द इन द फर्स्ट हाफ, एंड देन यू सॉ आर्सेनल व्हाट दे वांटेड टू डू इन द सेकंड हाफ, बट वी कुडंट आर्सेनल कुडंट डू व्हाट दे वांटेड टू डू. So I think you guys defended pretty well, or हम लोग we were clueless as always when going forward without a striker, without any plan, without I think Saka, Rice, they were missed on the wings and in the midfield. And अब obviously Zinchenko खेला था तो साला ने तो उसकी पूरी बैंड ही बजा दी थी on that side. Zinchenko डिफेंसिवली दिमाग का पैदल है, उसको समझ ही नहीं आता है भाई क्या करना है. और साला उस जब भी खेलता है उसके सामने उसकी बैंड ही बजाता है, इसलिए आर्टेटा पिछले 2 साल से उस लेफ्ट पे जिंचेंको खिलाता ही नहीं. जब भी लिवरपूल के सामने होगा टोमियासु को ले आएगा, केवियोर को ले आएगा, बट ही विल नॉट प्ले जिंचेंको अगेंस्ट साला. बट ऑब्वियसली प्री सीजन था तो इट्स ओके, यू हैव टू गिव टाइम टू एवरी प्लेयर. Listen, since we're on this, I think Arsenal doesn't have like a proper right wing back and a left wing back, right? नहीं, ये बेसिकली आर्टेटा का इशू है. ही ऑलवेज ट्राइज टू फॉलो पेप. पेप का भी देखोगे नाउ एक्सेप्ट फॉर काइल वॉकर ऑल द अदर डिफेंडर्स लाइक वो सेंटर बैक्स ही है. Hmm. वो उन्होंने Centre अभी backs. या अभी उन्होंने उसको बाय किया व्हाट्स हिज नेम लास्ट सीजन 80 मिलियन का. But तो फिर who टिम्बर played- कहाँ खेलेगा? तो अभी वही है, वी हैव लेफ्ट पे वी हैव हु हैव लाइक जो स्टार्ट किए हैं अभी, ठीक है, किविया और टिम्बर, जिंचेंको हैव स्टार्टेड ऑन द लेफ्ट. नाउ कैलिफियोरी आया है, ही इज आल्सो गोना स्टार्ट ऑन द लेफ्ट. और वो बॉलिन है क्या, बॉलिन है राइट, इट्स कॉल्ड बॉलिन है प्रोनाउंस. So उधर भी he's बोलोनिया Bologna, yeah. So he's played on the left side of Bologna for majority of the season. तो आर्टेटा उसको उसी रीजन से लेके आया कि I want to play this guy on the left. So I am But if you sure. have to choose a first starting 11 for the first Premier League match, so who are the like four defenders you would want starting? I would want obviously Gabriel and Saliba to start with White. Left back Alafiorico, I think he should, since it's a game against Wolves, if I'm not wrong, I think he should be given the debut. Timber का I think he should be brought in. Zinchenko को तो इधर दे very wild, But yeah, but considering Timber has been hyped up so much and he's a great player, why would you want
Calafiori to start instead Timber of is a Timber. right-footed player, first of all. हाँ तो inverted fullback में नहीं अभी चलेगा. आई थिंक क्या हुआ है कि लास्ट सीजन यू कुड सी आर्सेनल सारा अटैक्स वर फ्रॉम द राइट साइड. बॉल जाती थी सलीबा के पास, सलीबा वाइट, वाइट से साका, साका से ओडेगार्ड आता था, एंड देन वाइट ओवरलैप करता था, साका अंदर मूव करता था, ओडेगार्ड वाइट को देता था, वाइट अंदर साका को देता था. दैट वाज द मेजर. और लेफ्ट साइड पे मार्टिनेली का फॉर्म डिप्ड कंप्लीटली. सो यू कुड सी द लेफ्ट साइड वाज कंप्लीटली अनबैलेंस. हम लोग के वहां से प्लेस होते ही नहीं. हाँ, सेकेंड हाफ में ट्रोसार्ड आएगा तो जब व्हेन वी ट्राइंग टू थ्रो इन एवरीथिंग, तो यू कुड सी द अटैक्स कमिंग. बट जब गेम स्टार्ट होगा, व्हेन आर्सेनल इज इन कंट्रोल, the game is nil-nil, so everything is going through the right side. Nothing is happening on the left. Now, I think with Calipari coming in, he is not an inverted player. He वो wide ही रहता है. If you see, he usually stays wide, and then he break. उसका one of the best stats is he's a ball carrier, so he moves forward a lot. Even as a centre back, if you play him, he's gonna move forward a lot. So what that does is for us is that it gives us another option. Timber, because he is basically a center back and उसको last year starting में खिलाया भी था, he inverted a lot. But I think Arteta is going to move away from the inversion on that side because there's कुछ हो ही नहीं रहा है. क्या होता है, राइस अगर हैवर्ट्स को मिडफील्ड में खिलाते हैं, हैवर्ट्स को डिफेंस आती ही नहीं. जिनचेंको मिडफील्ड में आता है, वो लेफ्ट साइड पूरा का पूरा ओपन हो जाता है. हावर्ट्स आगे जाता है, which plays as a second striker, and then you have Zinchenko, Rice in the midfield, and then Havertz आगे खेल रहा है, वो स्पॉट फिल कर रहा है. जैसे ही काउंटर होता है, Havertz is not quick enough to get back. Zinchenko तो डिफेंस आती ही नहीं है भाई को. तो we are left open, and then Gabriel is alone there on that side, जहाँ पे then problems start. जितने भी अभी Got लिवरपूल का भी जितना अटैक हुआ was on the left side. got That it. is the right. Is Zinchenko ideally a left back or is it a midfielder which was I think he's a left converted to back. a left back? नहीं, he's been playing as left वो back, but कभी कभी वो स्ट्राइकर भी खिलाया है भाई एक बार. गेब्रियल यूक्रेन जेसस के लिए वो तो मिडफील्ड में खेला हुआ है. एंड दैट्स व्हाट आर्सेनल फैंस कीप सेइंग कि अगर उसको रखना है, बेच दो, बिकॉज ही इज नॉट ऐसा. ऐसा नहीं है कि ही ब्रिंग्स इन समथिंग दैट नो वन एल्स ब्रिंग्स इन द टीम. ठीक है, इसके जो पॉजिटिव्स है वो ऐसे नहीं है कि भाई ओ माय गॉड ऐसा प्लेयर हमारे पास है ही नहीं. या तो उसको रख रहे हो तो उसको एज अ मिडफील्डर बैकअप ले लो, व्हिच इज नॉट अ बैड आइडिया सिंस वी आल्सो हैव टॉमी आसो हु कैन प्ले ऑन द लेफ्ट. मैंने सुना है कि एक बार पेप ने मतलब इसको स्ट्राइकर खिलाया था, इवन दो आई थिंक गेब्रियल वाज इन द टीम और वाज नॉट सब्स्टिट्यूटेड. आई एम Yeah, नॉट yeah, श्योर. yeah, yeah, yeah. I read that somewhere. हाँ, आई रेड दैट That लाइक is what triggered जिंचेंको it. को स्ट्राइकर खिलाया था. Yeah, हाँ, probably. and it triggered him to I leave think, Manchester City, something like that. It and I was. think Jesus played well on the right for them. Like, they needed a striker, but he played on the right well for them. So I think Saka का backup तुम्हारे पास already है, which is Gabriel Jesus. Don't rely on him for goals. Just buy a striker, a proper striker. Oh, that's what I'm trying to say. कि if we नहीं, I think if we buy a striker, जो पता नहीं, अभी बहुत weird links आए थे something. अब I don't trust. अभी ट्विटर पे सब लोग, पता है, अभी सब फैंस को वो करने के लिए व्यूज आएंगे तो दे बोले कि आर्सेनल इज मूविंग फॉर ऑसिमन. So I was just thinking, अगर ऑसिमन आता है तो probably Jesus will work as a winger, or either on the left or the right. But I think he is more suited on the right. Even against Bayern Munich when he came on, तो हमने जो गोल मारा था was because Jesus ने वहां पे he took on 2-3 players, space create किया where Trossard could get the space to shoot. So it would be good to see Jesus on the wings because he is not a finisher. He is a very, वो बहुत easy chances miss करता है, बट उसमें जो क्रिएटिविटी है, उसके ही इज अ गुड हेड ऑन हिज शोल्डर्स. बट वो फिनिशिंग नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, नहीं सिखा सकते वो चीज. either you're a good finisher, you're not a good finisher, and to rely on him for the entire season to win trophies is like suicidal for us. But I think we might go for Osimhen. जोकर इसके साथ आ रहा था I बेचारा, think not one sure. striker is coming. I think one striker is coming क्योंकि एनकेटा अगर गया है, I think they will be looking for some options. I don't know about हाँ, Victor एक Osimhen, but कोई अकेडमी प्लेयर उठाया ना एकदम बढ़िया वाला. तुम लोगों ने हाँ, हाँ देखो, चीरो. वो एनकेटिया निकलेगा, देखना तुम. नहीं, मचड़ा फ्री निकलेगा, फ्री में मचड़ा फ्री मचड़ा. फ्री
फ्री में लिया है हम लोगों ने, इट्स ओके मतलब। तो तेरे को पता है, आई एम नॉट किडिंग, एडी एनकेटिया हमारे यूथ टीम का सबसे इज द हाईएस्ट स्कोरर यार ये अभी तक। एनकेटिया तो ये एनकेटिया सब इज का नॉट मुझे बैड, मतलब he's a very good spot player He's मुझे लगता है। very good. तुम He's लोग ब्रो ने, very good. ब्रो हाँ ही उसको ही तुम लोग ने स्कोर्ड अ खिलाया भी। हैट्रिक, ही स्कोर्ड अ हैट्रिक लास्ट हाँ सीजन, हाँ, किसी को याद है? यार, आई डोंट नो he's व्हाई actually अटेटा। very good. यानी उसका वन ऑफ द यार गोल्स उसने बॉक्स के बाहर से क्या शूट लिया था उसने। यार अटेटा को सब लोग ये बोलते हैं कि ही गिव्स चांस टू यंग प्लेयर्स और ये सब वो सब, बट टू बी ऑनेस्ट ही आल्सो इज गेटिंग रिड ऑफ अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स फॉर आर्सेनल बाय द वे। लाइक बहुत बाहर से बहुत डिपेंड करता है यार वो, लाइक प्लेयर्स पे काफी ही सारे अभी। आर्टेटा मुझे इज लाइक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनकेटा को बेचना नहीं चाहिए था, पर आई थिंक 25 में 25 million इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर एनकेटा, तो आई थिंक इट हैज गॉन मोर टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. the striker market is so inflated. I think we should push for 35-40 million क्योंकि हम लोगों ने last season we sold Balogun for about 50 euros. So I think we can get about 30-35 and plus. ऐसा नहीं है कि Nketiah was injured, not available. He's been available throughout the season. So we can get a little bit more money for him than what Marcel is offering us. But I think इवन अगर इन लोग ने एड ऑन्स के साथ भी अगर कुछ ऑफर किया अबव 35 million, तो आई थिंक इट्स अ गुड सेल, इट्स नॉट अ बैड सेल। यार बिफोर वी So guys, कंटिन्यू, I'm going to introduce Vijay. He is a Spurs fan and he's been supporting Spurs I think since 2004, so he Yeah. knows what pain is. एक एक ट्रॉफी देखी बेचारे Good, ने लाइफ में, EFL good old 2009। Harry Redknapp days, huh? Good old Harry Redknapp days. Yeah. Thanks for the sports introduction. Let's talk about Arsenal. आर्सेनल खत्म हो गया, वे मूविंग ऑन टू यूनाइटेड नाउ, यू जॉइंड इन लेट बड़ी। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। नहीं बट I नहीं really, शुरू। I really want to talk about Chelsea. I don't हाँ know यार, वी डिड like नॉट how to डिस्कस start चेल्सी it. लास्ट टाइम। We really are, because it's a whole topic, it's a whole discussion in itself. The यार द whole थिंग इज दैट इफ यू वांट transition, टू everything. डिस्कस चेल्सी तो यू नीड अ चेल्सी फैन ऑन हियर। लेट्स नहीं डू बट इट वी व्हेन कैन गिव देयर वी एक्चुअली। कैन नहीं, बैंटर्स असाइड, इफ वी टॉक अबाउट चेल्सी लाइक एज अ, बाहर से देख रहा है, दे आर बाइंग लाइक, आई एम श्योर एवरी सिंगल पर्सन है जिन्होंने उनका ट्रांसफर देखा था लास्ट सीजन, everyone thought they were going to do well because they got in so many players, Enzo Fernandez, Caicedo, like the two highlights of that entire project, and even they got in Sterling. So these three players, I was sure, I was very sure they were not this bad. They हाँ did मतलब वही, very and bad. plus they got in Pochettino, so Pochettino is a very good Yeah, coach. but Pochettino was, I was just expecting like them to get finished in and around top four. That is what I यार was. सो हाँ मतलब वही, I was saying top चेल्सी, four तो एटलीस्ट कर लेंगे considering they were 8th या 10th last to Yeah, last season. yeah. Yeah. यार सो So चेल्सी but का क्या इशू है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जो यूनाइटेड के साथ हो रहा है काफी सारे प्लेयर्स के साथ, they have bought players on very very high prices. Okay, maybe they're not on high wages but they're on very very high transfer rates, और उनपे वो प्रेशर आता है पहले से ही, like to perform. So I feel चेल्सी के सारे प्लेयर्स इसलिए अंडर परफॉर्म करते हैं बिकॉज उनमें बहुत लोड है, और एकदम से परफॉर्म करेगा यार। प्लेयर्स देखो, काइसेडो, एंजो, दे आर ऑल 100 million प्लेयर्स, ठीक है। हम But लोग जो Mohit, एक, if in and around everybody is expensive, the pressure should go now. If you are the आई only डोंट थिंक expensive सो or too expensive, then it will be like, okay, oh yes, I am in pressure, I am in the limelight यार। because इसमें I am the होता क्या one. है पता है But there are कि like वहां 10, वहां 100 million standing over here. यार मुझे दैट्स द थिंग, लाइक हम लोग तो देख ले यूनाइटेड में फॉर एग्जांपल दो या तीन प्लेयर होंगे जो मे बी दे आर बॉट टू हेवीली प्राइस्ड, और उन पे फिर लोड आते, जैसे एंथनी है, तेरा मेसन माउंट, यू कैन से, बट आई डोंट थिंक सो मेसन माउंट इतना एक्सपेंसिव, आई थिंक ही विल कम गुड। बट एंथनी है अभी फॉर एग्जांपल, और जेडन सांचो है, उन पर दिखता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन तू चेल्सी देख यार, पूरी टीम ही ऐसी है। तू यहाँ पर काइसेडो देख, इधर एंजो फर्नांडेस देख, लेफ्ट पे उनका वो कौन था, ये आर्सेनल का प्लेयर ने कौन सा स्टील किया भाई, Mudrik, मुद्रिक, Mudrik. मिहाइलो मुद्रिक। ऑलराइट, ऐसे इतने सारे प्लेयर्स लेके रखे, अरे उनका दे बॉट एन अमेजिंग, हाँ दे बॉट एन अमेजिंग प्लेयर
यार जो नहीं खेल पाया Lassie एंकुकू एंकुकू and Kuku. एंकुकू so expensive and पर apparently वो they still इंजर्ड था haven't यार इतना gotten rid सारा. of नहीं whatever that is मैं बोल रहा हूँ कि इतना पैसा खर्च किया उन लोगों ने और अभी apparently Lukaku's gonna come back because अभी तक उसके लिए कोई डील Yeah, नहीं but हुई I है think ये बोली का I think what he thought was what he wanted to do that I'll buy a player for 30-40 million. I'll either send him on loan, grow him, and then sell him for 50-60. I think Boli sort of planned to do this and it has backfired, नहीं obviously. नहीं बेसिकली जो या उनकी बट डील चेल्सी हुई थी का तो नहीं चेल्सी वर अलाउड टू उनको एक वो दिया था फ्रीडम सिंस इट वाज अ टेक ओवर और बहुत स्पेशल सर्कल दे गॉट अ फ्री हैंड कि दे कुड उनको एफएफपी का कुछ तो बेनिफिट था तो दैट्स व्हाई एंड प्लस उन लोगों ने वो जो मुड्रिक की डील में भी किया था दे फाउंड अ लूपहोल के जो भी पैसा पे कर रहे हो इट विल बी डिवाइड अब द कॉन्ट्रैक्ट के उस पर डिवाइड होगा तो वो एफएफपी रूल ब्रेक नहीं किया तो 80 मिलियन ने मुड्रिक बाय किया तो उसको 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया तो 10-10 मिलियन बट इफ यू सेल अ प्लेयर इट इज काउंटेड एज अ सेल इमीडिएटली सो उनके बुक्स बहुत Hmm. बैलेंस थे सो दे वर अलाउड टू स्पेंड दैट मच एंड बोली थॉट I think they were allowed to spend, I think, because the contract duration is like for 7-8 years, if I'm not या wrong. So I think या that सब is the loophole that they found. या पर वो आई थिंक अब लूपहोल उन्होंने प्लग कर दिया है बिकॉज चेल्सी वाज स्पेंडिंग क्रेजीली पागलों की तरफ स्पेंड कर रहे थे और अभी भी जतिन तू पार्टिसिपेट करने वाला है नहीं पार्टिसिपेट नहीं मैं भाजी देख रहा था बस यार मैं ड्राइव कर रहा था एक्चुअली ग्रुप हाँ जी तो सॉरी मैंने कहा यार अभी फ्री हुआ था हाँ मैं सुन रहा हूँ yeah so sorry guys yeah so anyways for the viewers we are still getting used to the softwares and all sorry for that yeah so we were discussing yeah so the Chelsea Chelsea transfer. yeah Chelsea transfer. So yeah, I think Chelsea अभी भी they are buying really good players. Osimhen के साथ भी उनका link है, and I think they are one of the few teams that will actually splurge the money without इतना और plus को wages भी high देंगे, which I think the other teams will be थोड़ा shy about to giving those wages, even though I think he deserves it because of his scoring record, and plus he is a very good striker. अब striker market में कोई है ही नहीं अभी like that stands out. I mean Tony is there I don't know why people are ignoring Tony कुछ चल रहा है क्या उस पे मतलब अभी भी कुछ एक्शन बाकी है क्या because of नहीं his उसका betting हो why गया. aren't people going in for him like I think I saw he's not going to renew his contract and he's available for a cut price like जो बोल रहे थे 70-80 million होगा now he's available for 30-40 I don't know why no one's going I in for him I wouldn't be surprised if Arsenal take a swoop at him next month. Sorry, नहीं this month. नेक्स्ट पता नहीं अभी आर्सेनल का कुछ पता नहीं हम लोग क्या कभी मरीनो की डील होने वाली कभी भी हो जाएगी मरीनो की डील एंड आई थिंक उसके बाद ही वी गोना मूव इन फॉर अनदर प्लेयर जहां तक हम लोग का आ रहा है कि वी माइट गो इन फॉर अ विंगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे कि वी हैव आस्क्ड अबाउट निको विलियम्स बट आई थिंक दैट्स जस्ट रूमर्स क्लिकबेट था it's बट not going to happen no Barca हाँ bound वही है I know वही Nico because Williams. as soon as that came out we knew it was clickbait because उसके अंदर वही वो टिपिकल जैसे विजय बोलता है ना कि वो पीआर की तरह लिखा होता है कि भाई आर्सेनल हैव आस्क्ड अबाउट हिम कि भाई क्या उसका Yeah. बारसा के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है मतलब इट इज लाइक Vijay समथिंग but वेरी वियर्ड what do you think about Arsenal अभी मतलब by the way guys like Vijay is actually an Arsenal fan Yeah. he's a इज नॉट एन truest आर्सेनल Arsenal फैन fan व्हाट इज द that ट्रूएस्ट I आर्सेनल know फैन because I यार don't हम know लोग I चेल्सी के बारे में 1 मिनट भी बात नहीं किया और आर्सेनल पहुंच गए फिर से तो नहीं because we बट need a Chelsea fan to ये raise एक banter मतलब मयूर नहीं नहीं चाहिए इधर एक पॉइंट है चेल्सी से मुझे एक पूछना था एक चीज तो चैंपियंस लीग फाइनल जब जीते कब जीते थे 21 में जीते ना 22 21 21 शायद 21 21 हाँ 21 चैंपियंस लीग फाइनल स्क्वाड और अभी स्क्वाड में कितने प्लेयर्स अभी भी है उनके टीम में why does it matter like change तो हो ही सकती है ना टीम आई थिंक केपा है हाँ बट ही डिड नॉट प्ले द फाइनल या बट केपा ही प्लेड फॉर मैड्रिड लास्ट सीजन हाँ मतलब और वो द सीजन केपा बिफोर है लोन वाज पे इन गया दैट तो स्क्वाड प्रोबेबली बट ही like yeah he was not the integral part but if you see like Thiago Silva Rudiger Aspilicueta Rudiger so तो these players yeah
Yeah, चलो so what happened is there are only two players in Chelsea right now who were the part of Champions League final in 21. Reece So James इतना and yes, only Reece James and the other guy is Ben Chilwell. Only two yeah, fullbacks. Both yeah, are yeah, injury prone. That's the other. yeah. That's for other discussion. But still, if you look at the squad overhaul, or what do you say, complete like changeover हो गया squad का. So maybe that's the reason Chelsea looks so poor. And in between this, there are a lot of manager changes as well. So maybe that's the reason they have been like having poor results for the last 2 3 years. But Yeah, So obviously because their coaching decisions are also so poor, like, plugging holes with Lampard and, like, Graham Potter. Like, Yeah, I but mean, okay, you take those punts, but you have to give it time. Like, you can't just crumble under the pressure and fire managers left, right, and center. yeah, Like, but the isn't it? Graham problem Potter with का तो Lampard, the जितना problem with यूनाइटेड ने Lampard 10 is साल like में he's मैनेजर a चेंज crack. नहीं किए, उतना वो लोगों ने मतलब 4 5 2 साल में कर लिए हैं भाई, इतने मैनेजर चेंज. मतलब does this really work? I mean, Lampard is more like a crack filler. It's like कि हाँ ये मैनेजर ने क्रैक कर दिया है, चलो ठीक है, now Lampard will fill लैम्पार्ड it. के That's लास्ट it. इंटरव्यू में वो हंस रहा था कि आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, yeah, याद है? but I agree when Yeah, people say कि yes manager if it's not working out change him you but I feel कि अगर आपके players have to be that good कि भाई you bring in a manager the players will जैसे रियल मैड्रिड की टीम जो है that team is so good you bring in another manager he will immediately start to give some sort of results क्योंकि वो players right, ही इतने अच्छे हैं. And same goes players with अच्छे हैं PSG. और हाँ, players भी थे like players are they stay there for more than 3 4 5 years. exactly, So exactly. yeah, so they already know how what are the expectations of the club, and that will not change over the course of time because they Exactly. have But already set the standards. Yeah. Madrid have that pull, right? Like that is not yet with Premier League clubs. अभी तक वो नहीं है, like that era, मतलब that aura of greatness. Like they have that pull. Like Mbappe देखना फ्री में गया यार वहां पर, मतलब he could have chosen any club, but he went to Real But Madrid why will because it is but the biggest that club in Real the world. Madrid is the biggest club in the world. Why will he go to any other club? He is the biggest player out there. अरे my point being, not every club has that pull ना कि best players को, मतलब for example नहीं खेलना अभी यूनाइटेड के लिए, या फिर even City like I hate saying this but was the best team in the world last year, right? जब they नहीं, won last I everything. would say कि they as a team if you on paper and if you see the अरे no, achievements अब and तो like City is still considered to अभी वो next season भी जब UCL में जाएंगे they मैं will be लास्ट the ईयर की बात favorites. कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ बिकॉज दे वन द ट्रेबल, ओके, एंड आई फील that if you played well throughout the year and you won everything that there was, you are the best team in the world. तो भी ऐसे कोई प्लेयर बाहर निकल के ऐसा नहीं बोलता कि मेरे को सिटी पे खेलना है. ऑलराइट, सो मैं ये बोल रहा हूँ कि इट इज स्टिल गोइंग टू टेक टाइम फॉर लाइक इंग्लिश क्लब्स टू गेट देयर. United had that for a while, but obviously last 10 years we've been a graveyard for new players coming in. But yeah, मतलब ऐसा Chelsea, yeah, see Chelsea's See, Chelsea recruitment का top policy. management ही पूरा का पूरा is so नहीं, मैं like कह रहा हूँ cake. उनका जो academy था, that was not academy, but their policy of like sending players on loan was amazing. Like Yeah. I knew a Chelsea fan who showed me a list of around 20 30 players who were out on loan, and these were players like, and this was like I think 10 years back, wherein they had players like Mohamed Salah on loan, they had players like Kevin De Bruyne on loan, they had players like Kurt Zuma on loan. On loan. I mean, they had a really, really good academy filled. I don't think these were academy players, but good players in their list, and these guys all were on loan. So how good were Chelsea back then that these players could not find a So starting berth in their that club. comes so वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बेसिकली जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स थे जो बहुत टाइम तक रहते हैं चेल्सी का इफ यू सी देयर पीक पीरियड फ्रॉम 2000 आई वुड से 8 से लेके 15 तक दे वर एट देयर पीक यार दैट 4 टाइम से दे लेके हैड 4 5 से जब मोरिनियो आया मतलब था तब से दे लाइक वन हाँ दे वन दी बट 4 5 में भी इफ यू सी कि दे डिडंट हैव अ कोर ग्रुप दैट बैलाक और वो सब का वो जो कोर ग्रुप बाद में धीरे धीरे आया अंदर
And I would say that core group stayed there for a very long period. And then you could shift and change managers, you can shift and change the Yeah. players in, If you bring if in you look new. at United, Real Madrid, Anson, if you look at Real Madrid squad, you're giving an example of Mbappe. Now tell me another star player Real Madrid signed in the last 5, 6, 7 years. Bellingham, Yeah, Bellingham. Yep, yep, Bellingham. yeah. Bellingham. Yes, Bellingham. Hazard, Yes, one or two Eden players here Hazard, and there. Yes, one or two here and Rudiger. there. बेलिंगम But है, विनिसियस जूनियर है, तू yeah, क्या बोल रहा he है was not यार? star. No, no, Vinicius was not a star before Bellingham. Like he played at Dortmund. His transfer fee is high, but no one knew the potential of Bellingham if he's that much big of a player. Okay, and even if you look at Belling, Hazard, yeah, he's one Bellingham, of those. everyone knew when he went to Dortmund that this player is going to be big. Yeah, Yeah, I well, mean, like obviously, Bellingham was the biggest youth player you could, youth in the sense वो young player that you could buy in the market. उससे बड़ा कोई player था yeah, नहीं. एग्जैक्टली पर मैं पूछ रहा हूँ प्रूवन प्लेयर्स जो है जैसे रियल मैड्रिड का पॉलिसी पहले ये था कि दे यूज्ड टू साइन गैलेक्टिकोस ओके Yeah. रोनाल्डो काका बेकम व्हाटएवर इट Mm. इज सो Mm. आफ्टर दैट if you look at Real Madrid squad in the last 10 years, their core players were the same. Okay. And there were also youth players like Valverde, and you have Nacho. Uh, you have Arbeloa, who used to play with Galacticos or whatever the star players as well. Like their youth integration is good, but the players whom they have signed in the recent seasons, like Tchouaméni, how is Tchouaméni different from Enzo Fernandez? Say for example, उन दोनों का जो भी मार्केट में हाइप आता है या प्लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, they both are almost, let's say both are almost same. Okay, they perform very well with their national teams और क्लब लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म किए and one went to Madrid where the structure is already there. The other went to Chelsea where he's playing with 11 unknown players who are like completely नए हैं club में. But the So money maybe is that good. money is good. So pull का factor नहीं है यहाँ. So in fact Premier League clubs are paying more than Real Madrid to lure players. So pull is already there, but the problem is the Premier League clubs, most of them at at uh, at the same period everyone like three or four big clubs are क्या बोलते हैं उसका structure collapse हो गया. You look at United, you look at Chelsea, and like these clubs used to be good, like good core players, add 3 4 around them, like season चल जाता था, season after season they used to compete. But now what happened is like bits and pieces they are all around. So pull hai, they are signing good players. If you look at United yeah, as but well, I don't see Chelsea improving in the next 2 3 years because they are still doing the same crap that they've been doing for like the last 3 years. अभी भी इन right? लोगों ने इतने सारे players sign किए, they are still letting go of youth players from their academy, like गैलेगर का भी आ रहा है, वो जाएगा. they have फिर उन लोगों ने ये चालबा का भी उसको आउट ही कर दिया, राइट? लाइक ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग और व्हाट नॉट. तो दे ट्रीटिंग देयर youth academy players really badly. I think Yeah, I Chelsea And just think start yes. selling players fast. No, They कौन just Chelsea? start Chelsea's selling problem. players. Chelsea's problem is much deeper than just changing of managers. So they have to get a group of players who can play for more than 3 or 4 seasons. So until then, like it's very difficult for any manager to come there and try to figure it out. Even हाँ Poch all the did not know experience. few now first team squad players. if you see now Enzo Fernandez का जो भी off the field problem चल रहा है with the racism का जो भी चला था, I am sure when he is gonna go back there's gonna be some friction in there and probably they might want to either get rid of him या तो it's gonna be a task to integrate him back in the team where Chelsea has a lot of players who are black and then they might be like कि इसका नहीं खेलना है जबकि यार when वो I हो saw गया the ऑलरेडी लाइक पीपल आर ऑलरेडी चेल्सी ब्लैक प्लेयर्स जो होते हैं ना वो ऑलरेडी हाँ लाइक दे आर शेयरिंग फोटोज विद एंजो दे से दैट दे हाँ अंडरस्टूड हिम लाइक वो इतना बड़ा saying है ना लाइक दे कैन नॉट द क्लब कैन नॉट exactly what अफोर्ड I'm saying कि Enzo Fernandez, Caicedo, then even Sterling is people forget Sterling is still under 30. He's still not या very old. So they have a group of players. Then the defense may they have good players for Fofana and all well who can actually stay for 3 4 years. But it all राइट depends कि कब तक ये लोग शिफ्ट एंड चेंज क्योंकि तुम लोग नया मैनेजर लेके आओ अब नाउ डिपेंड करता है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पावर अब मैनेजर को लेके आया कि यू कैन इफ दे गिव देम दैट सॉर्ट ऑफ पावर कि यू कैन टू मेक योर ओन टीम ही इज प्रोबब्ली गोना गेट रिड ऑफ few players and then bring in his own players या तो you do what
रियल मैड्रिड डज और पीएसजी डज कि भाई ये प्लेयर्स है, तेरे को इनके साथ ही करना है, यू कैन ऐड अ फ्यू प्लेयर्स बट यू कैन नॉट चेंज द कोर ग्रुप ऑफ द प्लेयर्स। सो ये हम लोग का स्टाइल है ये। सो इफ यू गो Right. पर विद अभी वो दैट, कोर प्लेयर्स ही नहीं है चेल्सी में अभी तो तो वो क्या है, कुछ बनेंगे पॉइंट ना। ही नहीं लाइक है। ही सेड इट्स गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन विद दे बॉट इन सो मेनी प्लेयर्स दैट दे हैव टू गो थ्रू अ ट्रांजिशन। बेसिकली दे हाँ। नॉट चेल्सी हैव ओनर ने ना प्राइम डे डील पे पूरा खरीद लिया उसने, जो भी I think I think I think जो I think मिला if I मार्केट was में वो ले लिया उसने। ले लो ले लो ले लो। अभी मेरे को I think if फोन I लेना was है यार, मेरा Maresca, फोन। I would have start to build my team around Cole Palmer. I think that's what I would do. अभी तो मेरे को कोल हाँ I पाल्मर का ही वो नहीं पता है यार कि क्या पोजीशन पे वो खेलेगा, वो बीच में खेलेगा, राइट पे खेलेगा। नहीं, बट राइट। या देख कोल पामर ने, आई टेल यू, अगेंस्ट आर्सेनल व्हेन आर्सेनल वेंट टू स्टैम्फोर्ड ब्रिज लास्ट सीजन, जब द मैच वी वेंट 2-0 डाउन, मुड्रिक ने वो फ्लूक सा गोल मारा था। तो व्हाट दे डिड वाज, आर्सेनल का जो लाइन था, कोल पामर केप्ट ड्रॉपिंग बैक, तो आर्सेनल यूजुअली जो स्ट्राइकर आगे रहता है उसको अच्छी तरह कवर करती है विद द टू सेंटर बैक्स। कोल पामर केप्ट ड्रॉपिंग बैक, केप्ट, तो जो मैन मार्क उसने पूरा हमारा जो लाइन ब्रेकिंग उन लोगों ने किया ऑन चेल्सी, मेंटेन अ वेरी गुड लाइन अंडर पोचेटिनो। दे हैड मिडफील्ड का लाइन, और वो कोल पामर बार बार ड्रॉप कर रहा था, तो ही बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है। And he's actually I will say he's one of the best forwards in the Premier League right now, in my opinion. या But ये because problem is Premier League में अभी actually में there are not very good forwards, just forwards I'm saying. there used to be a time when United, like under Mourinho, when Chelsea were under Mourinho, and we were under Sir Alex Ferguson. The only team that we were scared of was Chelsea. हमको नहीं पता चलता था कि भाई ये टीम और स्टैम्फोर्ड ब्रिज में जाने से फटती थी। और लास्ट सीजन, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक दे गॉट वेरी लकी बिकॉज यूनाइटेड का डिफेंस हैज बीन शिट। अदरवाइज हम लोग वहां पर भी उनको हरा के आते। बट आई फील Chelsea's misery is going to continue for another couple of years until they get stability. मरेस्का And yet कैसा the भी खिलाए, कैसा भी करे, उसको 1-2 साल तो देना पड़ेगा। and the biggest problem that I think they have is कि Nkunku and Cole Palmer I think play almost in the same position. So how do you play both of them? नहीं, वो एनकुंकू तो तो यार स्ट्राइकर ही खेलता है ना। बहुत ये इनको चीज ना, मेन स्ट्राइकिंग भी है। नहीं, बट दैट दिस इज द प्रॉब्लम। हम लोग एज लाइक यूनाइटेड, लिवरपूल और आर्सेनल का मैंने नोट किया है कि वेयर यू गेट इन टू गुड प्लेयर्स इन द सेम पोजीशन, हम लोग पैनिक करना स्टार्ट करते हैं, अरे ये कैसे खेलेगा, ये कैसे खेलेगा, ये कैसे खेलेगा। दैट्स द मैनेजर टू हाउ, उसको करना है, उसको रोटेट करना है। हमेशा यही होता है। अच्छे मैनेजर्स जैसे पेप है, पेप जूलियन एल्वारेज को पूरा टाइम बेंच पे रखा लास्ट ईयर, एंड वी ऑल नो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डेब्यू दैट गाय हैड 2 सीजंस यार, अगो। इट इज सरप्राइजिंग टू नो, हम लोग जब 1999 में ये ट्रेबल जीते थे, 4 स्ट्राइकर थे यूनाइटेड के बेंच पे, 4 स्ट्राइकर थे एग्जैक्टली। यूनाइटेड के पास। टेडी शेरिंगम, we had Cole, we had Yorkie, we also had सोल्शर। ओलेगोनार Solskjaer, ओलेगोनार Ole Gunnar, right? So we have 4 freaking strikers. अभी यूनाइटेड के पास देखो यार, 2 स्ट्राइकर हैं और एक तो इंजर्ड हो गया है अभी ऑलरेडी, और लोग डरते हैं यार इतने। पता है, ये अभी का कोचेस का ये है कि दे वांट टू वर्क विद लाइक अ टाइटर ग्रुप। एंड इवन सिटी, जहां पर सबको लगता है कि दे हैव लाइक अ बिग स्क्वाड, even they have a very tight knit group where they also don't have like more than 2 players in every position. नहीं, बट So तो सिटी का देखेगा, सिटी हैज लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर वर्सेटाइल, कैन प्ले मल्टीपल पोजीशन। सिल्वा मिडफील्ड में आता है, कभी कभी राइट पे चला जाता है। यू हैव सो मेनी सेंटर बैक्स हु कीप प्लेइंग ऑन द विंग बैक पोजीशंस पे। Then you had John Stones who was actually playing as a CDM. He would invert into a CDM. So like you can have versatile players. That's what I think. What Pep has basically implemented, or literally league को जो उसने पूरा swipe कर दिया है, is because he's got a core like 15-16 players who can play in any position. There are hardly 2-3 players उनकी टीम में है जो कोई और पोजीशन में खेल ही नहीं सकते। जैसे हालैंड है, उसको और कोई पोजीशन पे खिला ही नहीं सकते वो, एक्सेप्ट फॉर But आगे I think कुछ। उसमें थोड़ा but I think उसमें थोड़ा credit Pep को भी देना पड़ेगा because let's say hypothetically United have a injury free season. I don't think Ten Hag would probably be able to get the best out of all like 15-20 players. I don't think all managers are capable of doing that कि out of all of a sudden 2 महीने बाद तुम एक player को bench से उठा के लेके आ रहे हो and he's just performing. I think that credit goes to Pep for that.
I think a lot of credit to Pep and how he's managed to deal with Phil Foden, for instance. अभी तू देख यहाँ पर बारसा में क्या हालत है ये गावी और पेड्री की. इतना ओवर यूज किया है वो प्लेयर्स को. इवन रैशफोर्ड फॉर इंस्टेंस फॉर आर केस इतना ओवर यूज किया है वो प्लेयर्स को कि उनकी हालत खराब हो गई है यार. रैशफोर्ड तो आई थिंक ओले के लास्ट सीजन पे ही वाज स्ट्रगलिंग थ्रू इंजरी, और तो भी इंजरीज में भी खेला था ओले के सेकंड लास्ट सीजन में. इंजेक्शन ले लेके खेल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, इतना ओवर रिलायंट होते हैं हम लोग. और मेरे को याद है पेप ने जब लास्ट ईयर फिल फोर्डन को बेंच पे बिठा दिया था, इवन आफ्टर आई थिंक ही स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट अस इन दैट 6-3. हालैंड ने 3 गोल मारे, इसने 3 गोल मारे, राइट. तो और उसके बाद फिर उसको बेंच पे बिठा दिया, सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. आई थिंक हिज मैन मैनेजमेंट इज एक्सीलेंट. आई मीन यू कांट रियली fault that. But yeah, I guess other managers need to learn from that. Like they really need to learn from that. कि कैसे squad rotate करना है, कैसे youngsters पे ज़्यादा load नहीं देना है. ये this has to be learned. यार And इसमें लर्निंग शायद नहीं वो होगा. style भी. मैंसन उसका बात क्यों सुनते हैं पेप? उसका हिस्ट्री देख के सुनते हैं. दूसरे मैनेजर्स बताओ कौन है यार, प्रीमियर लीग में I जिसने mean, हिस्ट्री देख के नहीं तो अब जो दूसरा आर्टेटा जैसे yeah, बनेगा जो डिक्टेटरशिप करो. Alex, हाँ सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी रोटेट ढंग से करता था यार. ये तुम्हारा आर्टेटा हो गया, ईटीएच हो गया, इवन क्लॉप भी रोटेट नहीं करता था इतना. बाय द वे ही विल स्टिक टू. बट यार द वे क्लॉप प्लेड लिवरपूल, दैट्स हेवी मेटल फुटबॉल. आई डोंट थिंक प्लेयर्स कैन प्ले डे इन डे आउट लाइक दैट फुटबॉल. एक सीजन खींच लिया उन लोगों ने जब वो लोग ने ये प्रीमियर लीग जीत लिया या कोई और ट्रॉफी जीत लिया. तो उसके बाद इट्स अ लॉट ऑन द प्लेयर्स लाइक टू प्ले लाइक दैट ऑल द टाइम. यू हैव टू उससे पहले लाइक सीजन रोटेट. भी वैसे ही खेले मैनसन एंड लास्ट सीजन भी वो लोग लास्ट तक लाइक दे वर ऑन यार द देख, टॉप. दो चीजें होती है. एक तो कीपिंग योर प्लेयर्स मोटिवेटेड आफ्टर दे वन एवरीथिंग फॉर योर क्लब, राइट. दिल भी लाइक यार लास्ट सीजन जीत लिया, अब क्या करना है. ये एक वो. और दूसरा लाइक हाउ टू कीप योर प्लेयर्स फ्रेश. एक तो ये वर्ल्ड कप वाले सीजन में प्लेयर्स की इतनी लगी थी, लाइक सो मेनी प्लेयर्स गॉट इंजर्ड एंड इट्स अ कंप्लेंट थ्रू आउट के कुछ ज्यादा ही फुटबॉल खेल रहे हैं. लाइक उसमें then the only thing that you can do is rotate your players. रोटेट एक Because चीज. तुम्हारा एंड यार ये भी बहुत लाइक व्हाट डू यू से एट अ सर्टेन लेवल तुम बोल सकते हो कि उनको ओवरलोड हो रहा है. बट ये आई डोंट बिलीव इन दिस ओवरलोड स्टफ बिकॉज दे आर एलीट एथलीट्स हु ईट द बेस्ट फूड, हैव बेस्ट एवरीथिंग. एंड यू लुक एट टेनिस प्लेयर्स, 2-3 मैच खेल लेते हैं यार वो ओलंपिक्स में. अभी अभी सारे क्या विंबलडन खेल के वापस आए, एक हफ्ता ब्रेक, फिर से एवरी मैच, देन दे गो टू एटीपी मास्टर्स. इंजरीज होती है ना उधर भी. कैसे इंजरीज होता, बट दैट्स द पार्ट ऑफ द स्पोर्ट. इट वाज लाइक यही था इतने सालों से, यही था. But एक minute. Football is a contact sport, yeah. Like, when it comes to like, being fit on top of your game, you have to give it rest. Otherwise, then, for example, defenders, they'll leave that leg in if they're not fit enough, if they're Yeah. tired. Yeah, whatever. It's a contact sport, yeah. So it's a different, Yeah. you can't I compare completely tennis agree. to football, नहीं right? वर्कलोड का बात कर रहा हूँ. बट इफ देयर इज एनी इंजरी और कुछ भी है, उसका हेल्थ का कुछ हुआ, लाइक आई कंप्लीटली एग्री दे हैव टू गेट रेस्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ द प्लेयर इज फिट and resting those players, I don't know how important it is. It is important at certain level, but not at the level nowadays it has been put up. बीच में वो stupid international friendlies आ जाते हैं. Like, सब कोई काम नहीं है. Like, I think that can be reduced. Like, I don't understand what those friendlies are for. Break दे दो players को 1-2 week का अगर ऐसा हो तो. But there is. और ये प्रॉब्लम क्लब्स, ये प्रॉब्लम इट्स नॉट क्रिएटेड बाय यूएफए और फीफा, व्हाटएवर इट इज. क्लब्स आर क्रिएटिंग इट. इफ यू लुक एट फॉर एग्जांपल कैलिफियोरी साइनिंग, उसने साइन किया एक फ्रेंडली खेलने के लिए. ही मूव ऑल द वे फ्रॉम इटली और वेयर एवर ही इज हैविंग अ वेकेशन टू यूएस. एक दिन ट्रेन किया, फिर शायद एक मैच खेलेगा, फिर वापस, मतलब इतना दूर वापस है. उससे अच्छा लाइक ही कुड गेट सम टाइम टू सेटल डाउन इन इंग्लैंड, ट्रेन विद अदर प्लेयर्स हु आर देयर इन आर्सेनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज. लाइक एक मैच के लिए, लाइक क्लब्स आर क्रिएटिंग दैट. उनको मार्केटिंग चाहिए यूएस में. Also, the problem with club, 2 weeks रेस्ट मिलता था कैलिफियोरी को. That is all commercial. एक मिनट
I'm saying the problem with club football is that I can't think of any other sport जहाँ पे week in week out for 10 months across the year like players are playing. So I think that's why also it sort of burns them out and injuries and all becomes a concern because और कोई sport में इतना ज़्यादा frequency नहीं यार रहता. हफ्ते में 90 मिनट्स खेलते हैं यार. ह्यूमन बॉडी कैन टेक दैट एंड विद द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दे हैव. Each या week. 90 minutes, नहीं like they have been playing since Vijay, 8th or Vijay, 9th for I'll that tell you time. this. Someone, I think, if I forgot, I think it was Alan Shearer or someone who said कि you, जो लोग बाहर बैठ के देखते हैं, because they're looking through a wide camera or looking at the entire field, so they might think that the footballers have a lot of time and sometimes you feel the game is slow, but बोले कि if you put a GoPro on any of those players and you see when them the pro players I'm talking about the Premier League, the La Ligas or usme when you see them with the GoPro, you'll see that when they get the ball, it is so intense that you don't get that time that वो quick responses and that is actually that could be mentally and physically थोड़ा tiring तो होगा, which I agree that at that level you cannot imagine कि किस उस पे खेल रहे हैं वो लोग किस पेस पे किस इंटेंसिटी पे. intensity. And also adding to that, Varun, Baki even around the week, like Baki 5-6 days, the sessions, training sessions, and हाँ ट्रेनिंग each सेशंस day गो I think ऑन. they play massive matches in the training ground, so that is separate. So it's like literally 365 days तुम मतलब खेल रहे हो. नहीं यार, मतलब it's like if you're getting into sport, right, you'll be training every day, so you can't excuse that. That's their job, so you can't Yeah, excuse of working every Saturday. But if you compare a no, Rohit I Sharma or a Virat Kohli, so they don't have that much frequency as a footballer, na? Exactly. That's the reason football is much more exciting. Athletes are much more fitter, like astronomically much more fitter than cricketers. And what do you say? They earn a lot of money. Like money also plays a role. Like they have their own environment set where they're not disturbed by external factors. They live in a guys, I bubble. Like think थोड़ा हम लोग डिविएट कर रहे हैं. हम लोग जो टॉपिक पे थे उस पे नहीं है. आई थिंक दो क्लब्स का बाकी है. लिवरपूल का ट्रांसफर पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर यूनाइटेड का पास करेंगे और फिर आई थिंक वी शुड एंड द कॉल बिकॉज काफी लंबा हो चुका है. सो राहुल बताओ यार, कुछ करोगे कि नहीं तुम लोग ट्रांसफर विंडो में? कुछ नहीं कर रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है. वी आर डन विद लिवरपूल. नाउ लेट्स गो टू सी आई डोंट नो. आइडियली बस तो मैं तो आज तुम लोग जीते ना, सुबह तो मैं ये बोल रहा था वी जस्ट नीड टू वेट फॉर न्यूनेस टू कम बैक सो दैट ये आई रियली वांटेड लिवरपूल टू लूज. आई मीन क्योंकि तब शायद कुछ हम लोग खरीद पाते, ऐसा फील आता. ये जो है ना बट इट इज this मोर लाइक sentiment that I go with you because like we've been seeing under Wenger और I think उस टाइम से थोड़ा सा वो हो गया है क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ना माइंड में सेट हो गया है कि प्री सीजन में अगर मेरे क्लब ने अच्छा किया ना तो मेरा क्लब कुछ बाय करने वाला नहीं है. नहीं. यहाँ पे वरुण प्रॉब्लम क्या है पता है. आर्ने स्लॉट है इज मोर लाइक अ हेड मैनेजर. ओके, ही इज लाइक हेड कोच, सॉरी. So he has to go to, I think, Michael Edwards or someone like these are my players. I think this is they are doing well and everything. Okay, this is something which is going in my mind. Okay, I'm not saying that this is what is happening. I think ऐसा होगा कि माइकल एडवर्ड्स बोलेगा तुम जीत तो रहे हो, टू नील इनको देखो क्या जीता है. जिनचेंको को तो क्या मारा है उसको पकड़ के यूनाइटेड के. लाइक यूनाइटेड को तुमने ऐसे ही मजाक मजाक में हरा दिया बिना वीवीडी का. चलो सही है, क्वाड्रपल. So it's like it might be something, that positivity is coming. और इसलिए कुछ rumors, I think I'm not able to even get some strong rumors also for Liverpool कि yeah, like I हम think लोग इस that पे कर रहे हैं या ऐसे. Liverpool board doesn't have those high expectations this season, Rahul. इसीलिए इतना sign नहीं करके इतना aggressive नहीं है. Okay, they want to just see how it goes. I mean, even they are following the process thing. I think so. Yeah, I So, think it's gonna be more like, see, because Michael Edwards is also joining in as in a new position. He's not new to the club, but he's new to the position, to the club where he's been joining right now. Arne Slot is kind of new to the whole segment of the game, that is Premier League, high competitive game coming from Netherlands. So it might be in a process कि like किस तरीके से चल रहा है. And also they see the best part what I'm able to say is कि कोई छोड़ के भी नहीं जा रहा है. hmm.
So all are sticking. Like VVD के भी rumors नहीं आ रहे, आर्नोल्ड के आ रहे हैं, but I don't know how true it is. Will he be हाँ going? मतलब Will he ट्रेंट not का be going? रियल मैड्रिड के साथ आ रहा था ना कि ही माइट लीव. हाँ, yeah, but अभी एक rumor आ रहा है कि he's gonna sign a new 4 year extension, and I don't know how true it is. मोहम्मद साला तो नहीं जा रहा है, that is for sure, वो तो दिख ही गया है. And also this last season जो आए, जैसे शोबसलाय, एंडो आई थिंक शायद एंडो को वो लोग सेल सेल कर देंगे, इज व्हाट आई एम बिलीविंग दैट, एंडो कि तो नोट पे शायद. नहीं था, तुम लोग ने अभी खरीदा ना उसको. नहीं नहीं नहीं, लास्ट ईयर खरीदा है, आई थिंक 30 million इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंडो वाज बीन बॉट फ्रॉम स्टुटगार्ट. ही इज नॉट ऑन लोन फॉर श्योर, बट ही लाइक शायद सेल ऑफ कर देंगे, इज समथिंग व्हिच आई एम बीन हियरिंग और बीन रीडिंग. बट सी द कोर टीम जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, चेल्सी के, जो लिवरपूल के है, एलिसन, वीवीडी, मोहम्मद साला, so Trent. these players are staying is what I am believing. ये नहीं जा रहे कहीं पे. रॉबर्टसन, I shouldn't forget that, and also ट्रेंट आर्नोल्ड. तो ये लोग रुक रहे. So this shows that there is a positivity, I think. कहीं पे पूरा chaos तो नहीं हुआ है क्लॉप के जाने से, कि लाइक पूरा ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है. There is ऐसे जा भी नहीं some सकते हैं kind ना, of a ऐसे लाइक ऐसे जा भी नहीं सकते बिकॉज दिस इज, ये ऐसा नहीं है कि मैनेजर गए और प्लेयर्स सारे निकल गए. इट डजंट वर्क लाइक दैट बिकॉज नहीं दीस ऐसा नहीं प्लेयर्स है. आर सी ऑन हाई इफ वेजेस. नो इट्स लाइक ट्रेंट आर्नोल्ड, ठीक है, ही हैज वन एवरीथिंग. तू समझ रहा है, लाइक ये अभी उसका आई थिंक ही इज नॉट इवन 24 25, आई थिंक, राइट. उसको पूरा साल अभी पड़ा है उसके पास, एंड प्लस ही इज लाइक अ मल्टीपल पोजीशन प्लेयर. आई डोंट नो how good he can play in midfield or central defensive, but yeah, the chances are he is a multiple position player. It's very easy for a player like him to go to Real Madrid and try to win other trophies मुझे like La लग नहीं रहा Liga. यार रियल मैड्रिड ऐसे ऐसे प्लेयर को साइन करेगा बिकॉज they might have seen him. He's a liability in defense and he's good on the ball. But Real Madrid, they look for what do you say, what a trustable player. तो बिग मैच में आप नहीं कर सकते हो. आप मैड्रिड जाके you cannot fall flat in a big match. बट इट डिपेंड्स ना विजय, उसको कहाँ खिलाएंगे, वो डिपेंड करता है ना. I मुझे नहीं don't लगता know है. that this is what I said. Yeah, even I agree to you. I completely agree with you. But it is just that कि how they want to experiment this kind of play. अब तुमने चुआमिनी नहीं, सॉरी, कामाविंगा को गोलकीपर छोड़ के सारे पोजीशंस में खिला दिए खिला तुमने, सकते हो, हाँ and वो they were वो able to, yeah, they were able to do that. तो maybe some trend से भी वो लोग वो करा सकते हैं. But it is something where the high statistical data come into the play and they try to show that ki how good this player be in multiple position. But yeah, I think the whole core idea is that ki um, for now it looks Liverpool is stable, but I'm pretty sure the manager, the team, the squad will be excused this season if they not try to win anything. And even if they come, see, I think my expectation is just top four. तो टॉप फोर आ जाओ, दैट इज मोर देन इनफ. और या तो मैक्सिमम क्वार्टर फाइनल तक भी आ जाओ चैंपियंस लीग का, वी आर मोर देन हैप्पी विद दैट. या वो ये एंड इतना इतना नहीं है कि हर चीज जीतना है लिवरपूल को लाइक दिस हाँ, ईयर. दे जस्ट वांट टू anything plus plus समथिंग plus मोर. win is a huge bonus. Even winning a Carling Cup, जो जो भाव मिलता नहीं है, पर अगर वो भी जीत जाएंगे वापस से, तो ये मोर Like, देन हैप्पी विद इट. any new manager, I think even like ठीक है मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन चेल्सी के लिए भी एंजो would not be like एकदम crucified if he doesn't end up winning anything. If he like they came in एग्जैक्टली. sixth, if he somehow manages to they have a good squad. They have very या और squad में depth है उनके पास, अच्छे exciting players हैं. So if they do end up coming, let's say fifth or fourth, I think that will be a good season for Chelsea. I'm sure Chelsea fans के expectations बहुत high हैं, but not like they I understand कि don't कहाँ पे. I don't think so Chelsea इतना हाई फिनिश करेगा. I mean, you never know. पता नहीं, अभी मैंने तो देखा भी नहीं है नए मैनेजर को, how he's done in the championship. But Yeah, again, but bro, we uh, saw how Newcastle did 2 seasons ago when they got in Eddie Howe और सब players लेके आए थे. That was a surprise Eddie for everyone. Howe did not. Eddie Howe did not come in. That was not his first season. He That came I in. think that was his first season.
No, 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 no. no, It no. was not the first It season. was not his I first think season. he was the manager, and then around January transfer, mein Steve the club was been Steve bought by the Bruce Saudi Steve people. Bruce था स्टीव ब्रूस को निकाल के एडी हाउ को लाए और फिर आई थिंक मिडिल ऑफ द सीजन ही एडी हाउ को ले आए थे और उसने रेलिगेशन से बचाया था उसके बाद फिर नेक्स्ट सीजन फिनिश किया Take over हुआ था. Yeah, See, yeah, I think Chelsea coming around top six is a very good result. yeah, If yeah. Chelsea And comes around top six, that's a very good that they have achieved from the right. last season, even I without think winning any trophy. for that to happen, I think both the fullbacks have to be fit because they are the more what you say experienced players who have been at Chelsea for longer time. वो like बट बहुत एनीवे crucial यार होगा. चेल्सी I, चेल्सी वापस आ गया या और दूसरी चीज लाइक प्लेयर एक्सपेक्टेशंस एक चीज होगा फैन एक्सपेक्टेशंस दूसरा होगा सोचा अगर चेल्सी सिक्स्थ या सेवेंथ आया इफ एंजो इज रियली लाइक अ गुड प्लेयर इन हिज माइंड ही वांट्स टू विन स्टफ ही शुड लीव चेल्सी दैट्स यार हाउ इट छोड़ो ना वर्क्स. That's true. चेल्सी वापस चेल्सी पे कैसे आ गया लिवरपूल खत्म कर रहा था हमको मे बी एंजो शुड जॉइन लिवरपूल. नहीं लिवरपूल का यार see लिवरपूल का to have a very good strong season I think buy a centre back get a proper number 6 and yeah we can या have a strong season टू मिडफील्डर शॉट है यार लिवरपूल का टू हैव अ स्ट्रांग सीजन. लाइक जोन्स see मुझे नहीं लगता कि लाइक ही कैन प्ले इन बिग मैचेस. कौन जोन्स कर्टिस जोन्स जो है. यंग है ना Curtis so काफी Yeah. that is where McAllister and Szoboszlai comes in the picture ना शोबसलाई इजी नंबर 8 और आई डोंट यूज द नंबर्स ठीक है वो सीएम खेल सकता है सेंट्रल मिडफील्ड या बहुत अटैकर रोल पे वो अच्छा कर सकता है मे बी इन हाँ अ 4-2-3-1 और सिस्टम. हाँ and यार then you एंडो get भी a deeper player number आई 6 आई फील एंडो इज नॉट लाइक योर लाइक एंकर आई थिंक यू Fabinho नीड अ न्यू प्लेयर हाँ you need a player like Fabinho yeah see we need Rice is too much glorified, but I won't say Rice. Someone like Rice, but someone beneath Rice can also do for me. Rahul, is the new Um, manager using the same formation or did he change? no, Is he no, playing no. different? So his entire formation and the whole gameplay is very different. Hmm? I He did not has watch Liverpool. Yeah. yeah, I saw Arsenal this highlights, and I was also studying their whole match and everything. So how I see is that he badly needs a number 6 according to his gameplay. So There does is he a use need does of he bad. use 4-2-3-1 or He like a number uses 10? more like four. He uses more like 4-2-1-2 something like that. He uses Okay. where it's 4-2. I think it's 4-2-3-1 or maybe 4-2-1-2. It comes Okay. like that. So Yeah, the because if striker they yeah. basically Hmm? Yeah, go ahead. he plays with two pivots Hmm? where they play the most exciting football that happens in the center where they also come behind and the center backs are allowed to go wide and the wingers are allowed to go ahead and where they can transfer the whole ball passing abilities and everything that comes into the picture and also the most exciting thing what I'm able to see is that the up and down movement where the Liverpool were that heavy metal always chasing the ball running and the counter attack that is not there and I say that's a plus point because you get time to think you get time to analyze the situation and then change dynamically this is something which I'm able to understand from this kind of whole fixture that Arne Slot is playing but again pre-season you cannot judge anything from नहीं this बट thing it सो will व्हाट डू यू change प्रेफर द रॉक एंड रोल या कि अभी ये वाला oh स्टाइल अभी always भी rock and roll yeah rock and roll no it's a proven thing yeah it has proven it has won trophies it has given rewards so obviously but it depends yeah, how this can bring results I'm more excited to see that is where Yeah, I'm and more it excited to depends see on what players Arne as well. Slot Yeah, if you look at yeah and the players Sabasloy,
he played similar kind of football at Leipzig, which was complete all-out attack, and he played as like Yeah. 4-2-2-2. There were two number 10s there, Saboslai under I Yes. think it was Yes. Nkunku. Yes. And now Yes. he's being Yes. played in a different position under Klopp, and he really struggled there. Yeah. So for me, I think Saboslai will be an amazing player if he's played further forward. So that's the reason I was asking you this. Yeah, that is why I told you know, like another midfielder would not be a great idea because they want to experiment with Szoboszlai and they want to see how McAllister also get into that whole frame and all at the same time. If we get a number six, then it would be really good, and a centre back that would be really amazing. But let's see how it goes. But yeah, What about left to be back? very Left back honest, I'm very excited. Left back is sorted. We have Semikas. Okay, is that's Simicast, he? good. yeah. He's not, Because yeah, we don't what have. I've seen is he leaks lot of goals, and he doesn't have that presence as a defender. आज ही गोल मारा यार उसने यूनाइटेड के सामने. Attacking wise is very good. Defensive Attacking wise, wise Yeah. is good. Yeah, but I think, yeah, because I said, Vijay, the wing backs, they go very wide, I think. And that is where, and the whole pivot is the one who makes the game. So their whole idea is the four remains very wooden and the pivots come into the picture and they give it to the wingers. That is how the gameplay is. So defensively, I think he should be concentrating or he will be concentrating more on number six. And I think he will be signing one, but it depends how the whole structure is because it's very much new for Liverpool this season. So yeah, let's see. But yeah, quite positive with Liverpool. I think Top four would be a great finish. Anytime a new I manager comes in, a new player comes in, you have to be excited about it. ऐसा तो नहीं है कि वो damn कि not every time And yeah, works. I think Arne Slot has that kind of vibe, which I think they were looking for. The club has hold a huge magnitude of positivity around the club. Even if you're losing or something, he would be the one who would come in front and say that, he indirectly saying that I am the one responsible for this. I am the one who did this and this everything. Uh, but everybody knows the fact what it was, Are you and that sure? I remember him blaming the wind एक time पे no, sometimes he used to do. That is there. See, that is going to be there. The part and parcel sometimes of the manager role is compilation going to be there. compilation में कम है. क्लॉप का compilation है भाई where he blames a lot of external things. See, वो रहेगा ही. See, that is going to be there. That is always going to be there. Being a manager, you have to make sure that, the positivity remains around the players because he cannot be like, blaming himself all the time and then the players will be all like यार ये ऐसा ही करता रहेगा तो फिर तो let's go यार चलते हैं कहीं पे न्यूकैसल में जाते हैं मस्त मिलेगा तो it's more like it becomes uh, very difficult for such managers to control this kind of situation. Yeah, So पहले group को manage करना होगा यार Rahul. If he's able to manage the exactly, dressing room properly, tactics come yeah, second. It's not But all I about feel tactics, I don't think coaching or see Liverpool something. का I feel Liverpool का top management is very sorted. They know what they're doing. yeah, It's not. I mean, इतना गाली पड़ता है उनको for signings or whatever, but I think they're very sensible. वो लोग फैन सेंटिमेंट पे कम ध्यान देंगे फर्स्ट सीजन पे. ऑलराइट, अगर खराब जाता है, मेरे को लगता नहीं उनका खराब जाएगा सीजन, इवन दो आई वांटेड टू. ऑलराइट, बट फैन everybody सेंटिमेंट wants पे it, man. फैन सेंटिमेंट इतना खराब नहीं लेंगे वो लोग, और दे विल जज कि कैसा है फर्स्ट सीजन एंड देन दे विल फिल अप द गैप्स दैट दे हैव, बिकॉज़ उनका स्कोर प्लेयर्स अभी है. थैंकफुली साला एंड वैन डाइक आर नॉट लीविंग फॉर देम. ये मैंने वैन डाइक का रूमर सुना था कि वो कुछ बैटिंग स्कैंडल में पकड़ा, कुछ तो चल रहा है उसका, ये कुछ हाँ सच था कि नहीं? मैंने भी हाँ या मैंने आई एम येट टू गो थ्रू दैट थिंग मैंने अभी तो हाँ. पूरा वो देखा नहीं है बट या ऐसे थोड़े आ तो रहे उसके वीवीडी के probably Arshin knows a lot more since he is more या well आशी versed. नोज अ लॉट या Yeah, so we miss him today. Anyway, But yes, guys, शायद I think आर्सेनल विनिंग पे नहीं आर्सेनल विनिंग पे बेट किया होगा इसलिए पकड़ा गया होगा. तो लूजिंग पे करता है, तेरा भी देख लिया हम लोगों ने कितनी बार तू जीता. नहीं Anyway. also one thing I want to add is like I think it was 2021-22 season and that season Liverpool didn't buy anything if
if I'm not wrong, or maybe they bought one player or something. I don't know. कोई लिया था, but they ended up winning FA Cup and Carling Cup in that season, and the whole जब quadruple thing last started. season भी कि like quadruple कि started when हाँ you were at the top. Klopp announces हाँ, and trade. Premier League, even in Premier League we finished second. और चैंपियंस लीग आई थिंक थोड़ा सा बेकार था. आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड ने हराया था वो क्वार्टर फाइनल में, या तो कहीं पे वी एंडेड अप इन दैट. सो Liverpool not signing players and going in the season and doing wonders is not new for us. But yes, this time it's gonna be exciting because the manager But is new. I And think लिवरपूल के लिए I think every season they hope कि कप फाइनल में चेल्सी आ जाए कुछ भी करके. जितनी भी recent trophies है is basically Liverpool beating Chelsea, yeah. and उससे पहले के दो And I मैच think there was only one. I think there was only one final, if I'm not wrong, where City को हराया था FA Cup final में. नहीं, क्वार्टर सेमीफाइनल था. I'm not able to नहीं मैं understand. फाइनल में तो recently since 2021 से तो it's been Chelsea Liverpool final in the Carling Cup and we all know who's gonna win. Last season finally ऐसा लगा था when Klopp made all those changes and then लगा और Chelsea decided to take that to the penalties. 120th minute. लेकिन हम लोग पेनल्टीज में हराएंगे इनको. बच्चे क्या करेंगे पेनल्टीज में, प्रेशर में आ जाएंगे. बट दे वर लाइक कि BIDCH please hold my beer. But see, that's the fun. See, this is really fun to see, like, a top club like Liverpool, able to do these kind of experiments, that too in such kind of finals. Maybe he was forced to do this kind of changes. I don't know. It was not intentional. That was for sure. We were supposed to bring this kind of youth into the squad and वो तरीके से. But yeah, winning makes everyone happy, like, happy. So that's the whole situation The is. results will always sweep all the performances under the carpet. वो तो it is quite evident. तुम जीतते रहोगे तो जो problems है वो hide होती ही रहेंगी. क्योंकि इसका एकदम उल्टा होता वरुण. अगर कार्लिंग कप हारते ना, पूरा उल्टा होता. भाई बच्चों को लाएंगे तो यही तो होगा. तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या तुम जीतोगे चेल्सी के इतने बड़े स्क्वाड के सामने जाके? So that is bound to happen, like this kind of all this negativity will come around if you lose. So I think overall the top management seems to be very positive right now. It's been sorted, and it is just now to see how Arne Slot, performs. Yeah, Right. बहुत हो गया अभी Liverpool. Let's go to United. Mohit, again injury Yeah, prone let's season start. दिख रहा है सामने. So Let's guys, start with the we'll biggest. we'll end after United because we've been talking for a long time, and I think Yes. since this was more or less we are missing a few people, so I think this was more or less थोड़ा सा lengthy, I would say हो गया. So let's Yeah, just talk about United and then we'll end the stream. yeah. Let's talk about the biggest club in the world. Yeah, so Used to be biggest club in the world. अभी बात yeah, जो आज भी है ठीक है. आर्श ने रील शेयर किया ना, बोले this is a United fan. Now he cannot even spell glory. Anyway, so yeah, I mean, pre-season तो decent ही रहा है, to be honest. Like I तो want my team to win always, and people are still positive that people are getting You another lost two win. matches, एक आर्सेनल के सामने and then you lost against Pool. और एक हाँ, we did. But to be honest, I saw a little bit of the pool match in the morning. And we were playing well actually. Pool ने अपने chances convert किए. That was different. But हम लोग हमारे chances बरी नहीं कर पाए. और Rashford also was playing decent. Who's Ahmad playing striker? is playing well. Striker, I think Rashford again was playing striker. Not sure because मैंने match I think 25-30 मिनट से देखकर start किया और उसके बाद से ही आई थिंक यूनाइटेड खराब खेलने लगी. जर्सी आ गया कि still not there? नहीं, Xerxes is still training at Carrington. He is not on the tour. I think हाँ, but जितने भी यूरो वाले players थे, I think they are now back at Carrington. They are training there, and hopefully the season picks up. I'm really excited to see Xerxes, by the way. I'm sorry to cut you in between, but नहीं, but Xerxes can be promising. are Xerxes, you I guys think linked with is any gonna other play players? the
No, so I'll come to that, but I feel Xerxes is giving me glimpses of like जो मैं comparison देता हूँ of Roberto Firmino, हाँ, right? Roberto Firmino, He's gonna हाँ, link up yeah, play for our wingers, and that excites me. And what is exciting is like two youngsters again coming up this season, which you guys will see in United next season. One is Toby Collier, and the other one is Harry Amos, who's a left back. Harry yeah, Amos yeah, तो yeah. बहुत अच्छा खेला. He had a I think assist last game जो रियल बेटिस के सामने खेला था. काफी अच्छा क्रॉस डाला. थोड़ा फॉर्चुनेट था, बट काफी अच्छा क्रॉस डाला for Ahmad's goal. And Toby Collier again is playing well. And I think Casemiro और वो अच्छा खेल रहे साथ में. So coming back, I think our transfer window season has been good so far, not great. Because You we've signed two gotten players. signings early. We signed two players so far, and we have gotten rid of an academy player for 10 million, Willy Kamwala, और हमने Mason Greenwood का finally end कर दिया saga with like 30 million to Marseille. Now we are linked with three players, alright, जो सबसे ज्यादा links आ रहे हैं. एक तो है Ugarte, who's at PSG. We've been linked with him a lot, and hopefully we complete it. I think वो loan होगा with an obligation to buy, so it does not put strain on our books ये season. Then we are linked with Mazaraoui. That is contended with AWB leaving. उसका वेस्ट हैम के साथ लिंक आ रहा है और डेलिट के साथ आ रहा है अभी भी स्ट्रांगली लिंक. ऑलराइट, आई फील माजुरोई, आई डोंट नो यार, आई लाइक, मेरे लिए सॉफ्ट स्पॉट ये सॉफ्ट स्पॉट है फॉर AWB. आई डोंट वांट हिम टू गो, लाइक आई थिंक ही इज द बेस्ट वन ऑन वन डिफेंडर इन द वर्ल्ड. एंड आई थिंक वी नीड अ प्लेयर क्या लाइक बात दैट. कर रहे हैं यार इफ वी मैनसन. नहीं यार, ये व्हाटएवर दैट इज, लाइक यूनाइट फैंस की ना मैं बातें, वो डैलो को वर्ल्ड क्लास बोल देता है, कुछ भी बोलता है यार. यार कुछ नहीं होने मैं वाला वर्ल्ड क्लास यूनाइटेड सीजन का इस बार. टेना को हटाओ पहले. नहीं है यार. सो मैं ये बोल रहा था कि AWB में मेरे को सॉफ्ट स्पॉट है. आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट one-on-one defenders. I did not say that he is great right back. मैंने उसको defender बोला है. His tackling is pretty good. He मैंने तुम उसका लोग ने जो अगर मेजरली आई हैव सीन AWB इज डूइंग इज मेजरली जो वो स्पाइडरमैन की तरह पूरी टांगे फैला के ही जस्ट मेक अ लास्ट डिच एफर्ट, बट आई थिंक पीपल आर सीइंग it's थ्रू not इट. last it's not last ditch. He is really good at that. And अगर वो He's इतना good. खराब होता तो Yeah, he's he's No, good. really no, not saying he's like He's not he's he's really not good. bad, He's not but really, and really it's good, but good. he's good. Yeah. it's Yeah. not last ditch tackles, by the way. They are very calculated. I think उसके पूरे यूनाइटेड करियर में आई थिंक उसने एक पेनल्टी दी है, वो भी आई थिंक पेनल्टी नहीं थी. He got the ball. Are you All right. seriously penalties is the thing to count for Arey, him? but if you're taking a player who lunges a lot, you will definitely talk about penalties, right? अगर But talk lunge कर about रहा the है वो fouls box now के because अंदर, he gets the he's ball. not a center back. He's playing on the wings, so probably he's more out of the box than anything. यार यार कुछ नहीं यार यार. वो लेकिन यार पूरा हाइप कर रहा है मैनसन बेकार में. वो क्या कर रहा है नहीं यूनाइटेड में 10 सीजन? कितने साल था यूनाइटेड में वो? क्या जीता उसने? I think this is his fifth or sixth season. FA Fifth Cup. sixth या season नहीं है, fourth season है हाँ और whatever. यार मैं वो एक ज्यादा है विजय शायद. तू मैं विजय तो जीता हुआ पार्ट लेकर आ जाएगा तो फिर तो अरे यार नहीं सभी यार, बेकार ही हो जीता जाएंगे ना. नहीं, जीता लेट्स हुआ नॉट पार्ट. ब्रिंग द विनिंग पार्ट, बट लाइक या आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग. वो ठीक है. इज यार एन ये देखो अबव एवरेज प्लेयर. चैंपियंस लीग में कहाँ तक पहुंचा यूनाइटेड ने. लाइक व्हाट एवर टाइम्स, हाउ मेनी एवर But यार टाइम्स that दे बट is तब वेंट इन AWB नहीं चैंपियंस खेल लीग. रहा but था. चैंपियंस तब नहीं AWB नहीं चैंपियंस एग्जैक्टली खेल वेयर रहा वाज, था. अरे क्या बट हुआ चैंपियंस उसको? लीग में तो ETH का प्रॉब्लम बिकॉज एनी टाइम देयर इज अ लीग सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन्वॉल्व्ड, ETH doesn't do well in the league. यार 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 He's नॉट ओनली not लास्ट सीजन, that consistent. is नॉट The that is नॉट all problem ओनली is लास्ट that is he's सीजन all not a वरुण, myth. being consistent. नॉट ओनली लास्ट यार सीजन एक बट मिनट, व्हाट. ट्रांसफर्स खत्म कर ले, उसके बाद तुम्हारी बकचोदी झेल लेंगे. ओके, ये जो तुमने एजेंडा चलाया ना, और विजय को पता नहीं क्या हो गया है. क्या प्रॉब्लम यार है? AWB ने क्या किया तेरे को अरे यार वो स्पेसिफिकली? यार वो पका. नॉर्मल प्लेयर है यार वो. मतलब इतना वर्ल्ड हाँ क्लास ठीक है. प्लेयर है तो लाइक यू नहीं, मैड नॉर्मल विद भी बार्सिलोना नहीं वुड है. हैव ही साइंड इज हिम. नॉर्मल नहीं अबव है वो ठीक प्लेयर. एवरेज. है. ऑलराइट, नहीं He's यार, above ही इज अ average. गुड प्लेयर. नहीं यार, नहीं ऑलराइट, नहीं यार. ठीक है, He's कोई बात above नहीं, तेरे वहां average, नहीं you can भेजेंगे say. उसको. वो कहाँ आर्सेनल जा या रहा है? वो वेस्ट हैम जा रहा है या आर्सेनल रियल मैड्रिड जा रहा है? बताओ. आर्सेनल या स्पर्स ही जा रहा है वो, तो इट्स ओके. ठीक नहीं है, स्पर्स जा सकता है, चल. स्पर्स ऐसे चुपके से प्लेयर्स बाय करते हैं. यार वो जा रहा है वेस्ट एनीवे, हैम और ये बंदा बोलता है कि वो मतलब
वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है यार, कुछ भी यार मान Yeah, सकते। see, the only reason why we are getting rid of him is because he does not fit into ETH's system. He wants a player to push forward, और इसलिए वो जा रहा है. अदरवाइज डिफेंसिवली उसने जो FA कप में किया सिटी के सामने, डोकू को उसने ही पकड़ के रखा था. आई डोंट नो इफ यू सॉ द मैच. आई डोंट थिंक यू यार डिड नहीं नहीं, सच, it बिकॉज was he दैट्स यार played वो व्हाई. well देखा against यार, he मैं played मैं well बता No, रहा हूँ no, सच में, मैं that बता रहा is हूँ सच में, that is ईटीएच why. का कोई सिस्टम ही नहीं है यार। पर I How would do हाँ, I genuinely agree. say कि I agree. City in the final was it they looked legged, और I think जो तू बोला ना कि to keep players motivated after winning the Premier League, they did not have a Champions League final that was following up with FA like they did in the last season. So they were तुम partying. लोग जीत You, तुम लोग जीत लेते. अरे I'm just saying कि भाई City अरे हमारा मोटिवेशन है पर क्वालिटी नहीं है, क्या करें। लिवरपूल को हराया था हम लोगों ने. लिवरपूल वाला मैच तो क्या क्रेजी मैच था यार. अबे लाइक राहुल इधर ही बैठा है. तुम लोग कॉवेंट्री के सामने वो मैच देख के तुम लोग डिजर्व नहीं करते थे फाइनल में आना, वेरी ऑनेस्टली। अरे नहीं 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 वरुण, नहीं 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 नहीं, कोवेंट्री के सामने सेलिब्रेट करके हाँ वो क्या पागलों की तरह सेलिब्रेटिंग, आई वाज लाइक होता यार क्या। देखो, मैंने कॉवेंट्री वाला मैच देखा ही नहीं था, और थैंकफुली नहीं देखा, सो वरना गुड, मेरा दिमाग खराब हो जाता. लिटरली गुड फॉर बट यू। एनीवे. तू जला देता, बट वो जर्सी जला तू देता, तू जो तू पहना है ना, लिटरली लाइक बोलता है कि भाई हम लोग की क्या बोलते हैं, वी डू नॉट डिजर्व टू बी इन द फाइनल आफ्टर वाचिंग दैट मैच। अरे फक ऑफ यार वरुण. तुम बोलते हो क्या ऐसा, एक भी मैच चूते की तरह खेल के? नहीं लेट्स नहीं, नॉट तो गेट नहीं, इनटू ऑब्वियसली लाइक डिजर्व टू बी प्रॉपर बोलेंगे, फाइनल, कंटेंट. मैं हमेशा डिजर्व बोलता हूँ नहीं, वी डिड नॉट डिजर्व टू विन। यू डोंट डिजर्व टू वी सेलिब्रेट, यू बीट डोंट वी डिजर्व बीट टू वी बीट सेलिब्रेट वी द बीट फाइनल। लिवरपूल. और वो अगर वहां पर भी खत्म हो जाता ना हमारा FA कप, तो चलता. मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं था. लिवरपूल वाला मैच बहुत बढ़िया मैच था. यार हम लोग ओके, इतना स्टेज बट पे एनीवे. पहुंचते ही नहीं, हम क्लब सिर्फ दो कप दो कॉम्पिटिशन्स दो में, अच्छा, हम दो हारते ही अच्छा एग्जैक्टली. क्या। 3-on-3 तो काउंटर तो प्ले था। आर्सेनल बकवास नहीं करे तो अच्छा है ना, एग्जैक्टली मतलब. हाँ। वी आर फोकसिंग ऑन द लीग. बिल्कुल। वी विल बी विजय ऑन कोई टॉप बात ऑफ नहीं, ये द सीजन लीग हम लोग फॉर लाइक. जीतेंगे। तू बांधे ना, वापस आना मत हम लोग बेल्जियम से, वी सीधा आर अंडमान जाना वी तू। आर फोकसिंग. वरुण नहीं नहीं वरुण नहीं, वरुण वो आदित्य, वी आर लाइन, वरुण फोकसिंग वो ऑन द लाइन लीग. मत बोल, आई थिंक इसलिए तुम नहीं जीत रहे हो। वो लाइन मत बोलिए, सीजन हमारा प्लीज मत बोलो। प्लीज एक शट द अरे एक्सपर्ट, फक क्या अप. है, एक मतलब क्या, एक्सपर्ट तुमको, हाँ हाँ, एक नहीं नहीं, एक्सपर्ट तुमको मैं बता रहा है, मैं एक्सपर्ट हूँ लास्ट टू इसमें। लास्ट सीजन मैं पूरा सीजन बोलता रहा कि हम नहीं जीतने वाले, नहीं जीतने वाले, नहीं जीतने वाले, ठीक है। और लास्ट सीजन भी मैंने बोला था कि व्हेन वी वर सेकंड एंड वी, आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि सिटी को, क्योंकि मैंने देखा था लिवरपूल की 3 साल से बैंड बज रही थी, दे वर नॉट एबल टू कैच दैट फकर, ठीक है, तो तो मेरे को उसको पता ही था हम कॉन्फिडेंस लोग नहीं नहीं कर। बोलते, उसकी फटने को नो, बोलते हैं. क्या अभी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तो मेरी बाद में, सीजन के बाद में मारेंगे? यार तू तो बोल रहा था जीत जाएंगे. क्या अरे हुआ? वो उसको इसको क्या फट्टू फट्टा बोलते बोलना हैं. है कि पागल हो ठीक है. गया क्या तू, ये आर यू इसको फट्टू सिटी, बोलते एक हैं, मिनट, इसको एक मिनट, कॉन्फिडेंस नहीं हाउ बोलते हैं. मेनी पॉइंट्स डिड राइट. लिवरपूल गेट व्हेन दे लॉस्ट द सीजन ट्वाइस टू सिटी? एक बार 97, एक आई बार डोंट. 92 समथिंग पॉइंट्स थे। 99। नो वन. नहीं नो 99 पे वंस तो गोना पहुंचे, तुम लोग रिमेम्बर. नो 97 पे वंस थे। गोना रिमेम्बर. 97 या नो वंस 98, गोना 98 पे रिमेम्बर. थे, नो 98। नो वंस 90 गोना नहीं, रिमेम्बर. 99 में भी शायद हम लोग हारे थे, आई थिंक गोल डिफरेंस में। नहीं तुम लोग गोल डिफरेंस पे आई कभी डोंट नो गए यार, नहीं, अभी नहीं गोल डिफरेंस पे नहीं गए, यार ट्राई नहीं सी, हुआ। नहीं 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 नहीं, गोल डिफरेंस नो में नहीं वंस गए। गोना रिमेम्बर इन 3 years. ओके. जैसे कोवेंट्री वाला मैच 3 साल में किसी को याद नहीं रहेगा. तो नहीं नहीं, अब तो तेरे प्लीज को याद लेट मी जस्ट दिलाएंगे। फिनिश माय बिट. गाइस, एनीवे, मेरे को जाना है, तो लेट्स फिनिश. नहीं नहीं, we just end the मेरी. stream now. Okay. Anyways, या चलो guys, thank you so much for joining in, and अरे we'll इतना अब्रप्टली मैं बता रहा था ट्रांसफर्स अभी. बाकी ये वरुण विजय का वरुण, ओके ओके बकचोदी. ओके गाइस, AWB. थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट वीक बात करेंगे, चलो। नेक्स्ट वीक बात करेंगे। खाना कोई ऑर्डर, बड़ा साइनिंग खाना है कि ऑर्डर छोटा करता हूँ साइनिंग मैं। है, हम लोग को खड़े रहना चाहिए तेरे लिए। यूनाइटेड का हर एक साइनिंग बड़ा होता है, तुमको नहीं पता चलता. हम लोग स्ट्रीम एंड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, So bye यूनाइटेड का guys, एक्चुअली thanks for चलो बाय listening. बाय गाइस, बाय। बाय बाय। हर साइनिंग का पैसा बड़ा होता है। Bye guys. That's how we end it. Bye. चलो बाय गाइस। बाय।